This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and Alhamdulillah, it has been 20 years. I have been offering my online. It has been the 20 years I have been teaching English as a language, and it has been more than 3 years I have been offering my online services all over the globe, especially Pakistan. And I welcome all of you on this platform. And if you are seriously interested in improving your spoken English, I wish you good luck on this journey, which you are going to spend for almost 3 months. This is professional spoken English online course, especially for those who have completed their matriculation at least, and they are willing to improve themselves. अगर आप एक student है, एक housewife है, एक professional lady है, and if you are only a housewife and you want to improve yourself, this is an ideal course for all of you. If you don't if you cannot afford this course, so I will advise you to like and subscribe my channel. But remember that this will help you to improve your knowledge only. You won't be able to speak English fluently because two-way communication, two-way communication means that you listen and you speak. And when you are listening to me on YouTube, that's a one-way communication. One-way communication does not help you in speaking English. So you always have to follow two-way communication for improving yourself. So this course helps you, and this course gives you an opportunity to have interactive sessions. You can listen, you can speak, you will have discussion class, you will have a spoken class in your vocabulary class, and in your pronunciation session, you will have the opportunity to speak and listen. Right now, you are listening because you have license of listening in my class. But as you get your confirmed license, then you will also have an opportunity to talk in my class as well as because I like to take interactive session. Like and subscribe my channel for more updates. And we offer 3 shifts: morning 10 to 1, afternoon 3 to 6, and night 8 to 11. हमारी 3 शिफ्ट्स होती हैं. पूरा एक लैंग्वेज स्कूल की तरह मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी फैकल्टी है जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही है. एंड ऑल टीचर्स दे हेल्प यू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली. आप मॉर्निंग में, अब ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द हाउसवाइव्स आर हियर, so that's why they think that it's not possible to stay for 3 hours. I know. That's why we have given you multiple shifts that you can manage your classes in 3 different timings. We offer you same class 3 times a day. मैं यही बातें जो कर रहा हूँ आपसे, ये मैंने सुबह भी के स्टूडेंट्स के साथ की थी. कुछ बच्चे मौजूद थे सुबह में. अगर आपने सुबह का सेशन कभी स्किप हो जाए, आप दोपहर में ले लीजिए. आपका दोपहर का सेशन स्किप हो जाए, आप रात में आ जाइए. We have no problem at all. Nobody stops you taking as many classes as you want. मुझे नाम बता दें उस एकेडमी का पाकिस्तान के अंदर, चिराग लेके ढूंढ लें, जो आपको ये ऑफर दे दे कि अच्छा बेटा आप लाइव सेशंस दिन में 9 घंटे बढ़ाते, जब दिल चाहे आप ले लीजिए. Nobody offers, और मैं ये भी कहूंगा nobody can offer, क्योंकि जिस तरह की महंगाई है, उस तरह की महंगाई में इतनी बड़ी फौज के साथ, टीचर्स की फौज के साथ, आप इतने कम पैसों में आपको ये सर्विसेज नहीं मिलती. अमूमन ज्यादातर जो ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं. आपको रिकॉर्डेड सेशंस फॉरवर्ड किए जाते हैं कि आप इन सेशन से इम्प्रूव कर लें. बट वी ऑफर यू लाइव सेशन विद डिफरेंट 8 different टीचर्स इन जस्ट ₹3,000 मंथली. अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपकी एक महीने की फीस माफ कर दी जाती है. ये भी कोई नहीं करता. आपको 6,000 आप सबमिट कराते हैं प्लस 1,000 एडमिशन फीस. टोटल आप ₹7,000 सबमिट करवाते हैं. इस तरह से आपको 3 महीने की एक्सेस मिल जाती है. अच्छा, मेरी क्योंकि 20 साल का तजर्बा है. अब कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं 1 महीने की जमा कराती हूँ. तुमने पहले महीने ये फैसला, पहले दिन ये फैसला कर लिया है, पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं.
तो बस तुम नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। अपनी सोच को बदल लो। इंसान जो सोचता है ना वो होता है, याद रखना। थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट। मेरा ये डायलॉग याद कर लो। थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट। कुछ करने के बारे में सोचना ही कामयाबी की पहली चाबी है। तुमने ये सोच के एडमिशन ले लिया है, पता नहीं कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी, तो आप मुझसे पूछ ले, आप नहीं कर सकेंगी। आपने क्योंकि सोच ही गलत रखी है। आप सोच में ये लेकर आइए, इंशाल्लाह मैंने करना ही है, आंधी आए या तूफान आए, आई हैव टू डू इट। अपने आप को बॉन्ड करने का इसका तरीका है। बॉन्ड कैसे करें अपने आप को? आप जो है वन टाइम पेमेंट कीजिए, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। यू हैव लॉक्ड योर सेल्फ इन अ केज। ठीक है ना? इंसान को जब कुछ करना होता है ना, तो आप वो अंदर जाए पिंजरे में और बाहर से ताला लगा दे कि अब मुझे इस पिंजरे को तोड़ के ही निकलूंगी मैं। नहीं, पता नहीं पिंजरा टूटे ना टूटे। बस देखिए, इंसान जब भूख लगेगी ना तो वो पिंजरा टूटेगा। जोर जोर से लाते पड़ेंगी उस पिंजरे के ऊपर कि मुझे निकलना है इससे बाहर। समझ रहे? ये साइकोलॉजी है। अगर आपको कोई एक इंसान पिंजरे में बंद कर दे और बोले ये लो ताला लेके ताला लगा दो, सर नहीं, पिंजरा नहीं टूटेगा। टूटेगा क्यों नहीं टूटेगा? जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, टूटेगा। तो लॉक योर सेल्फ इन द केज। दिस इज द साइकी, दिस इज द माइंडसेट। आप अपना माइंडसेट ऐसा सेट करें पहले दिन से, नहीं यार मैंने लॉक करना है, अब तो करना है। मिला एक प्लेटफॉर्म, 9 घंटे पढ़ा रहे 8 टीचर से, कहाँ मिलता है भाई? नहीं मिलेगा। 3 साल से बच्चों से कह रहा हूँ, मुझे दूसरा एक प्लेटफॉर्म का नाम बता दो जो तुम्हें इस तरह से लाइव सेशंस देता है और बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, सारे क्वालिफाइड है, सब वेल ट्रेन्ड है। यू विल नेवर फाइट, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बहरहाल फैसला आपका है, पैसे आपके, जिंदगी आपकी, फ्यूचर आपका। हमारी 3 शिफ्ट्स हैं जो आपको मिलती हैं। हम क्या क्या ऑफर करते हैं? हम ग्रामर क्लास आपको देते हैं, ग्रामर और स्पोकन की आपको कुल मिलाकर 3 टीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मिस कोमल, मिस बुशरा एंड अ पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू, सर हसीब। हम 3 लोग, आप ये 3 लोग आपकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे, बिकॉज दे help you to speak English. They help you to minimize your errors. They rectify you. 3 टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो आपकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन समझते हैं? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है आपकी गलतियां निकालते हैं, आपको बार बार समझाते हैं कि देखिए आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, आप ये गलती कर रहे हैं, आप ये गलती कर रहे हैं। दे ऑलवेज टेल यू द राइट थिंग्स। आइए उसके बाद डिस्कशन। डिस्कशन टीचर का काम कुछ और है। दे हेल्प यू टू गेट फ्लुएंसी इन योर इंग्लिश। कभी डिस्कशन क्लास में आप ये महसूस नहीं करेंगे कोई आपको रोके, कोई आपको टोके, बेटा आपकी ये गलती है। उनका काम ही नहीं है, उनका काम है फ्लुएंसी पे काम करना। दे विल मोटिवेट यू, दे विल ऑलवेज से वेरी गुड, एक्सलेंट, कीप इट अप, जबरदस्त, बहुत अच्छा बोला। मोटिवेशन मिलेगी आपको, दैट यू हैव टू स्पीक फ्लुएंटली इन द डिस्कशन क्लास। प्रोनाउंसिएशन की टीचर का काम ही अलग है। वो क्या काम करवाती है? इस वर्ड को तुम्हें कैसे बोलना चाहिए, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। 2 दिन हफ्ते में आपको ये सेशन मिलता है, कभी मंडे ट्यूसडे मिलेगा, कभी वेडनेसडे थर्सडे, और उसके बाद आपको एक वोकैबुलरी सेशन मिलता है। वोकैबुलरी की टीचर अलग, प्रोनाउंसिएशन यूएस क्वालिफाइड टीचर अलग, डिस्कशन की 3 टीचर्स आपको मिलती हैं। आप सुबह में लें, दोपहर में लें, रात में लें, 3 डिफरेंट टीचर्स, 3 4 5 6 डिफरेंट टॉपिक्स। सो व्हाट इज आई हैव ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स ज्वाइन डिफरेंट डिस्कशन सेशंस विद डिफरेंट टीचर्स ड्यूरिंग द डे। आपको इजाजत है आप दिन में 3 डिस्कशन क्लासेस ले सकते हैं। आपको इजाजत है आप दिन में 3 स्पोकन क्लास ले सकते हैं। स्पोकन टीचर मैंने आपको बता दिया, मिस बुशरा, मिस कोमल। कभी या तो तीनों क्लासेस मिस बुशरा के साथ आपकी होंगी, कभी तीनों मिस कोमल के साथ हो सकती है, या 2 मिस बुशरा या मिस कोमल। समटाइम्स इसी तरह से एक ग्रामर मेरी, एक ग्रामर मिस कोमल की, एक मिस बुशरा की। तो हम तीनों की जिम्मेदारी मैंने आपको बता दी। डिस्कशन टीचर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आपको देखें कौन से अलॉट करते हैं। आज आपकी मुलाकात होगी मिस परी से, लेकिन आप 6 मुख्तलिफ डिस्कशन टीचर्स आपके राउंड में आते हैं। मंडे ट्यूसडे डिस्कशन किसी और टीचर के साथ, वेनेसडे थर्सडे किसी और के साथ, फ्राइडे, आइए फ्राइडे, फ्राइडे इज द मोस्ट बिजिएस्ट डे। सबसे ज्यादा रश फ्राइडे को देखता हूं मैं।
क्योंकि फ्राइडे को होता है आपका प्रेजेंटेशन सेशन, फ्राइडे को होता है आपका रोल प्ले। आपको फॉर एग्जाम्पल यू आर अ वाइफ, आप एक लड़की को हस्बैंड बना देंगे एंड हस्बैंड एंड वाइफ आर टॉकिंग टू ईच अदर। आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर दिया काफी, और जब वो घर आया तो वो नहीं था जो आपने ऑर्डर किया, और आपने 5,500 रुपये दे भी दिए। योर हस्बैंड इज शाउटिंग एट यू and now you are saying it's not my mistake, why are you shouting at me? Then he slaps you, then you start crying and you say I'm leaving home. Then he tries to stop you, but you don't. Then you call your papa comes, and this is the situation. Role play activities are there. Presentation, role play and fluency test, vocabulary test, ये सब फ्राइडे को हो रहा होता है। डिबेट सेशन, ये सब फ्राइडे की एक्टिविटीज है। एक सेशन आपको और मिलता है जो हमने मेंशन नहीं किया हुआ, वो होता है 1-to-1 डिस्कशन। ये सुबह में अवेलेबल होता है सिर्फ। सुबह में आपका प्रोनाउंसिएशन सेशन नहीं होता, सुबह में आपको प्रोनाउंसिएशन की सेशन की जगह पर 1-to-1 डिस्कशन सेशन मिलता है, वो भी बहुत जबरदस्त है। उसके अंदर स्टूडेंट्स को बात करने का मौका बहुत ज्यादा मिलता है। दिस इज ऑल व्हाट वी ऑफर इन रुपीज जस्ट 7,000 फॉर 3 months। आप मंथली पेमेंट करना चाह रहे हैं, आप मंथली पे कर सकते हैं 3,000 प्लस 1,000 एडमिशन फीस 4,000, उसके बाद अगले महीने 3,000, फिर उससे अगले महीने 3,000, फिर आपका डिस्काउंट खत्म हो जाता है। आप डिस्काउंट अवेल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अवेल कीजिए। हमें अच्छा लगता है कि आपकी 1 महीने की फीस माफ हो जाए, और हम इस बात से बेफिक्र हो जाते हैं कि ये बच्ची अब यहाँ से लैंग्वेज सीख कर जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं, तजर्बाकार आदमी हूँ, जो 1 महीने की फीस बच्चा सबमिट कराता है ना, वो पलट के वापस नहीं आता। वजह बता दूं, पप्पी की शादी, जब घरेलू हालात, माशी हालात, और एक दफा अगर वो वापस नहीं आया तो अब जब वो दोबारा फिर आएगा ही नहीं। ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमने तजर्बा किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने रिव्यूज लिए, जो पहली क्लास होती है ना, बस आप उसी से सीखते हैं। तो आप डे वन से अपना माइंडसेट बना लें, लॉक योर सेल्फ इन केज, मैंने ये करके जाना है। अभी अगर नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, मत करो। कोई एहसान हम पे ना करो, ना अपने ऊपर करो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, यू आर अवेलेबल फॉर 3 months, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। हमने आपको 9 घंटे दे दिए, अब आप सुबह में कोई सी क्लास में, सुबह 10 से 11 लें, दोपहर में 4 से 5, रात में 10 से 11, जिस तरह से आपको अपनी क्लासेस को शेड्यूल करना है कर लें। डिस्कशन क्लास दिन में 3 मरतबा है, जब दिल चाहे ले लें। ग्रामर स्पोकन दिन में 3 मरतबा है, जब दिल चाहे लें। वो प्रोनाउंसिएशन आपको दिन में 3 दफा मिलती है क्लास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जब दिल चाहे लें। और इन दोनों सेशन की एक्सेस आपको मिलती है जब आप फीस सबमिट करवा देते हैं। इसके मैंने रिकॉर्डेड सेशन आज आपके सुबह ग्रुप में शेयर किया था, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, टाइम टेबल क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, आपके पास शायद ये मौजूद भी होगा आपके पास। ठीक है, कोर्स कंटेंट क्या है सर, आप पढ़ाते क्या है? सबसे पहले बेटा आती है बेसिक्स। बेसिक्स से हम स्टार्ट लेते हैं। आज आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कल मेरा पहला लेक्चर होगा, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी। उसके बाद हम सेंटेंस फॉर्मेशन पे बात करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब, यस नो एंड WH वर्ड्स। सर, बेसिक्स पढ़ने के बाद हम किस काबिल हो जाते हैं, हमें क्या आ जाता है? ये आपका तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक आपकी बेसिक्स चलती हैं। इन 3 to 4 weeks यू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट। आप में से वो स्टूडेंट्स जो एक्टिवली आजकल स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, इंटर किया है, दे विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश विद इन 3 to 4 weeks। लेकिन आप में से जो हाउसवाइफ्स हैं, हु हैव डन नथिंग फॉर 5 years एटलीस्ट, कम से कम 5 साल से आपने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चों को भी नहीं पढ़ाया, तो फिर आपके सिस्टम को एक्टिव होने में हो सकता है महीना 1.5 महीना लग जाए। इट टेक्स टाइम। आई बात समझ? So that's why I'm requesting all of you that spend your first 3 weeks and 4 weeks regularly, because you are going to build up your confidence and you will realize one thing। आपको एक चीज का एहसास हो जाएगा। कौन सा एहसास?
वो एहसास ये है दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि दैट मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लूंगी, और आप देखिएगा यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव। सोच पर डिपेंड होता है, आप सोच ले बेटा मैंने करना है, ठीक है ना। अब इसमें कोई दो बातें नहीं है कि क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें सिखा सकेगा या नहीं सिखा सकेगा। मैं आपसे कहता हूँ आप सीखने वालों में से हैं या नहीं है। हमारी तो जिंदगी के 20 साल इसी में गुजर गए, आधी से ज्यादा जिंदगी मेरी पढ़ाने में गुजर गई है। आई एम 37 years old and I have been teaching for 20 years। तो मेरी जिंदगी, आधी जिंदगी का जो तजर्बा है वो पढ़ाने पर ही है, और एक ही चीज पढ़ाई है और वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड आईएलटीएस। आई हैव डन नो अदर जॉब। 16 साल मैंने फिजिकल पढ़ाया, 16 साल फिजिकल मैंने 10 साल एक इदारे में पढ़ाया, 10 साल एक इदारे में पढ़ाया, 4 साल मैंने दोनों इदारों में पढ़ा रहा था। तो 10-10 साल मुझे एकेडमी में पढ़ाने का तजर्बा है। अब मैंने अपना काम दूसरा कर दिया है। नाउ आई एम टीचिंग virtually all over Pakistan and it has been almost 3 years। अच्छा, ये भी क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड। मेरा पैसा हलाल हो जाता है जब मेरा स्टूडेंट बोलना शुरू कर देता है, एंड इन 3 to 4 weeks आई गेट रिजल्ट्स। मेरे पास रिव्यूज आते हैं बच्चों के। अब आज से हमने वोकेबलरी सेशन भी दिया, उसके बड़े अच्छे रिव्यूज आए, खुशी होती है that students are learning, especially females, they actually cannot go outside the home, they cannot leave home for 2-3 hours। अब एकेडमी में जाना मैं कहता हूँ एक किसी के लिए भी फिजिबल नहीं है, मेल और फीमेल फॉर बोथ। it's not feasible, it's not because we don't have time, but we can spend at least, we can manage our time। हम घर पे बहुत मसरूफ होते हम घर पर हैं, but we can manage our 1 hour in the morning, 1 hour in the afternoon and 1 hour at night, right? So this is something very good। फिर उसके बाद टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं होता कि पहले आप टेंसेस को मुकम्मल कर लें, नहीं, हम टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स तीनों साथ लेकर चलते हैं। तो आप तीनों चीजें साथ साथ खत्म करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्स भी है, मॉडल फ्रेजेस भी है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मिक्स टाइप एंड टाइप सी। और इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो हम सैटरडे की क्लासेस में, वर्कशॉप्स के अंदर कवर अप करवाते हैं। पैसिव में पढ़ाता हूँ, मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाता हूँ, प्रेपोजिशंस पढ़ाता हूँ, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाता हूँ। ये सारे टॉपिक्स आ रहे होते हैं। क्वेश्चन टैग्स पढ़ाता हूँ, पॉजिटिव्स पढ़ाता हूँ। ये सारे टॉपिक्स आपको सैटरडे को मिल रहे होते हैं, ठीक है। आप ये वाला भी अगर आप देखें, अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहे, तो ये टाइम टेबल अगर आपको समझ आ रहा हो, वैसे तो मैंने बहुत एक नया टाइम टेबल जो दिया है, ये बहुत आसानी से समझ आ रहा है क्योंकि मैंने डेज भी डिफाइन कर दिए। आपको क्लासेस का भी समझ आ रहा है फ्राइडे। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें, ठीक है। 3 डिस्कशन टीचर्स आपको मिल रहे हैं, एक प्रोनाउंसिएशन, एक वोकैबुलरी, और 3 ग्रामर प्लस स्पोकन। 3 3 6 2 8, 9 hours a day with 8 different language experts live on Zoom। ये हमारा पेमेंट मेथड है। आपको लगता है कि दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर you can improve your spoken English, this is the platform you have been looking for, where you can speak and where you can share your ideas, so you can submit your fee। हमारा कोई दूसरा पेमेंट मेथड नहीं है, आप इसी को, आवाज को, इस पेमेंट मेथड को फॉलो कीजिएगा। आप जैस कैश कर सकते हैं, इजी पैसा कर सकते हैं, आप एचबीएल के अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट आपको करनी है, उसके बाद यू हैव टू पे नो अदर चार्जेस। आइए आपकी जूम की ट्रेनिंग शुरू करते हैं कि जूम पर आप किस तरह से क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लासेस ले सकते हैं। अभी आप चेक करेंगे तो देखें आपके सारी चीजें आपके पास बंद हुई हुई है। ना आप चैट में लिख सकते हैं, ना आपका माइक ऑन हो रहा होगा, ना आपका कैमरा ऑन हो रहा होगा। आप चेक कर लीजिए, आप चेक करें, सारी आपकी जो सर्विसेज है वो बंद है, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट सर्विसेज। सबसे पहली सर्विस आपके पास आ रही है, whenever you have a question you have to raise your hand। जब भी आपका क्वेश्चन होगा आप हैंड रेस करेंगे। हैंड रेस करने की आदत आपको होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट नो हाउ टू रेज हैंड यू वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। हैंड रेस कीजिए, तलाश कीजिए, देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, और जैसे ही आप हैंड रेस करते हैं टीचर आपको रिस्पॉन्ड करता है। वेरी गुड नीलम।
बाकी लोग ढूंढे। इससे हफ्सा वेरी गुड, अरूज वेरी गुड। अच्छा ये अंगूठा शो कर दिया, इससे टीचर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। व्हेन यू आर रेजिंग योर हैंड यू आर रेडी टू स्पीक। वो बशीरा वेरी गुड। ये क्लैपिंग है, बिनते हसन दिस इज क्लैपिंग। ये वहां हैंड रेज ढूंढना है, ये रिएक्शन में चले गए आप, वहां देखिए लिखा हुआ है रेज हैंड, रेज हैंड। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस, वेरी गुड आयशा। इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड तो हम अपनी फिजिकल क्लासेस में नहीं करते थे, जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कि जैसे आप हैंड रेस करते हैं आपका नाम हमारी स्क्रीन के ऊपर बड़ा बड़ा आ जाता है, somebody is raising hand। बाकी लोग ढूंढे, 4 लोगों को मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। वेरी गुड हेरा। अच्छा अब आपको एक और ऑप्शन तलाश करना है कि आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है, तो आप कहेंगे नहीं सर। अब आप क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस देखिए आपको नजर आ रहा है क्रॉस। क्या आपको वीडियो नजर आ रही है? कैन यू सी वीडियो? तो हाफसा वेरी गुड। अब क्रॉस लगना शुरू होता है। ये आप क्लास में ड्यूरिंग द क्लास टीचर आपसे यस और नो वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आप क्रॉस लगा सकते हैं। कभी आप नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे आप किसकी टीचर ने कहा अरुज डू यू वांट टू पार्टिसिपेट, अरुज ने कहीं मसरूफ थी किसी दावत में, वहां शोर बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने क्रॉस लगा दिया, नो मैडम आई एम नॉट अवेलेबल। राइट। आप अगर मैंने कहा बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, इज माई स्क्रीन विजिबल, तो आपने बोलने से बेहतर है आपने क्या लगा देना है, यू सिंपली हैव टू मार्क टिक, टिक लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए। यस सर एवरीथिंग इज विजिबल। अब अपने क्रॉस को टिक में बदल दीजिए। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको एक ऑफर दी है, अब आपको कभी आपकी क्लास में प्रेजेंटेशन हो रही होती है, आपका क्लासमेट बहुत अच्छा बोल रहा है तो आप तालियां बजा सकते हैं, आप बाजा बजा सकते हैं, आप मुस्कुराहट भेज सकते हैं। आपको उसकी बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, आप टीचर ने आपसे बात करी, टीचर ने आपको बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छी लगी बात, आपने फौरन एक हार्ट भेज दिया, एक फ्लावर भेज दिया। देखिए ऐसे कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, मुख्तलिफ ऑप्शंस, बाजा, क्लैपिंग, रिएक्शंस में दिखती है सारी चीजें, आपको तलाश करें। इससे मोटिवेशंस होती है, आपके क्लासमेट जब बात कर रहे होते हैं एंड समबडी हैज स्पोकन वेल, सो आप तालियां बजा रहे होते हैं, वेरी गुड नीलम। बाकी लोगों को क्लैपिंग मिली, देखें क्लैपिंग, यस। ऊपर देखें आपको नजर आ रहा है क्लैपिंग, यस, दिस इज व्हाट आई वांट, क्लैपिंग। अब आप मुझे बताइए, आप लोग मुझसे शायद ज्यादा फेसबुक का इस्तेमाल आप लोग करते हो, मैं फेसबुक को किसी और पर्पस के लिए यूज करता हूँ, आप लोग किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं। मुझे ईमानदारी से बताइएगा, आप लोगों ने कभी फेसबुक पे या इस तरह का कोई इदारा देखा जो आपको 7,000 रुपए में 8 टीचर्स की सर्विसेज दे रहा है, 9 घंटे लाइव पढ़ा रहा है? अब आप क्रॉस लगाएंगे या टिक लगाएंगे? ऐसा कोई इदारा देखा आपने? अब और ये बात सुनने के बाद, जानने के बाद, ये सिर्फ 7,000 रुपए में 8 टीचर्स, वो भी 3 महीने के लिए, तो अगर आप महीना निकाले तो शायद हार्डली 2,300 रुपए पड़ा है। 2,300 रुपए कौन सी एकेडमी चार्ज करती है? अब एक क्लास 9 क्लास का बच्चा कोचिंग पढ़ने भी जाता है ना हफ्ते में 6 दिन, तो उसकी फीस 3,500 रुपये हो गई है। वो कोचिंग जाकर पढ़ रहा है, उसमें भी 5 सब्जेक्ट पढ़ेगा वो, हाँ, 5 टीचर्स पढ़ाएंगे, या आपको 8 टीचर्स की सर्विसेज मिलती है, 5 days a week 9 hours a day। तो ये बात सुनने के बाद किसके दिल पे लगती है, किसको ये दिल पर बहुत अच्छी, जिस आप जब कोई बात दिल पे लगे पॉजिटिवली, ठीक है ना, कि यार ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमने नहीं देखा, तो आप एक हार्ट भेज सकते हैं। टीचर ने आपको अच्छे रिमार्क्स दिए तो आप टीचर को हार्ट भेज सकते हैं, इसमें बिल्कुल तक वो ना किया करें, हिचकिचाहट महसूस ना किया करें। ये टीचर की मोटिवेशन है ये हार्ट। आपने क्लैपिंग कर दी, आपने रिएक्शंस भेज दी, तो दिस इज द मोटिवेशन। आपने किसी क्लासमेट को के लिए उसने अच्छा बोला, आपने हार्ट भेज दिया, सो दिस इज द मोटिवेशन। यूज किया करें, ये कहलाती है नॉन वर्बल
कम्युनिकेशन। चलें, अब आपका चैट सॉल्व हो गई है, चेक कीजिएगा आपके चैट्स की सर्विसेज, चैट्स की सर्विसेज आपकी ऑन हो गई है। अब आप चैट में सलाम का जवाब देने जा रहे हैं। चैट के अंदर मैंने देखे, आप सबको चैट में लिखना आना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड। सही है भाई, चैट में लिखना आ गया। अब आपके माइक की सर्विसेज ऑन हो रही है। अब आप माइक में, आप अपना माइक चेक कीजिए, और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना स्पीकर कनेक्ट कर दूं, वेट कीजिएगा, मुझे आवाज आ जाएगी, सही आवाज आएगी। The Bluetooth device is ready to pair. Aux input mode. अब आप बोले तो अब आपकी आवाज आ जाएगी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, अब ये देखें, अब आपकी जूम ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। जब ये सारी चीजें पता हो जाती है ना बेटा, अब आपको आएगा मजा क्लासेस लेने में। हैंड रेस करेंगे, टीचर आपको रिस्पॉन्ड करेगी, चैट में आप बात करेंगे टीचर से, और फिर आपके माइक्स की सर्विसेज आपके पास होगी। और माइक अपने बंद रखा करें, वरना पीछे जो एनवायरनमेंट है ना घर का, वो आपकी क्लास में आ जाता है। तो बेहतर ये कि जब आप क्लास ले रहे हो तो बस इस बात का ख्याल रखें कि आपका माइक बंद रहे। वैसे तो टीचर आपका माइक बंद कर देते हैं, लेकिन कभी कभार मेरे सेशन जो हो रहे होते हैं लैंग्वेज के, उसमें आप लोगों के माइक्स आपके कंट्रोल में होते हैं, बिकॉज यू कीप आस्किंग क्वेश्चंस और यू कीप रिस्पॉन्डिंग, तो आप अपना माइक खुद ऑन करते हैं और खुद ऑफ करते हैं, इसका ख्याल आपको खुद रखना है। अच्छा, आप कैमरा आपका बंद रहता है हमारी तरफ से, हमेशा जो है वो सिक्योरिटी लगी हुई होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी सब सिक्योरिटी नहीं लगी हुई होती, तो यू हैव टू बी केयरफुल, because sessions are normally being recorded, grammar, pronunciation and vocabulary. So if you turn on your camera by mistake, recording हो जाएगी, फिर आप कहेंगे सर वो 10:40 में मैं भी आ गई हूँ वीडियो में, काइंडली आप कुछ करें। क्या हो गया? तो फिर हमें वो या तो वो हम रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाते, या फिर हमें उसको कट करवाना पड़ता है। ठीक है, सो बट यू हैव टू बी केयरफुल। आप चेक कर ले, उस पर लिखा हुआ होगा आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सर्विस, ये सिक्योरिटी लगी हुई होती है। फिर भी टच सिस्टम है मोबाइल फोन में, कभी कभार बाय मिस्टेक यू टर्न ऑन योर कैमरा। आगे चलते हैं, सारी सर्विसेज आपके पास हो गई, जूम ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। सर हाउ डू वी गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हमें रिकॉर्डेड सेशंस कहाँ से मिलते हैं? आपको रिकॉर्डेड सेशंस के लिए मिलता है गूगल क्लासरूम। ये आपका गूगल क्लासरूम है, पूरा ये पोर्टल आपको मिलता है। 3 महीने तक आपके पास इसकी सर्विसेज रहती है। एज लॉन्ग एज यू आर अवर स्टूडेंट, यू कैन यूटिलाइज ऑल द लेक्चर्स हियर। उसके बाद भी स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम दे देते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि लिमिट होती है, हम 250 से ज्यादा, 500 से ज्यादा इस रूम के अंदर स्टूडेंट्स ऐड नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो हम जरूर किसी को भी रिमूव ना करते हैं। लेकिन ये देखें, आप सबसे पहले ये आपका फाउंडेशन लेवल स्टार्ट होगा, उसके तमाम लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस में। और ये एक और सीक्वेंस है, नीचे आपको टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनका मटेरियल भी इनके अंदर मौजूद है। और जो फाउंडेशन लेवल के नोट्स हैं वो आपको यहाँ बिल्कुल नीचे जाते हैं, तो ये फाउंडेशन लेवल के नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आप टेंसेस के नोट्स आपको चाहिए, टेंसेस और मॉडल्स, ये मॉडल्स के नोट्स और मॉडल्स की वर्ब बुक, टेंसेस के नोट्स, टेंसेस की वर्ब बुक, कंडीशनल्स के नोट्स, कंडीशनल की वर्ब बुक, आर्टिकल्स के भी नोट्स मौजूद है, आर्टिकल्स पे लेक्चर्स भी है, आर्टिकल्स पे टेस्ट भी है। आप इस गूगल क्लासरूम से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। आप हर टॉपिक के ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज
एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपका चल रहा शुरू होगा अभी। देखें, ये आपका पहला टेस्ट आज वेट कर रहा है। फिर आप जाते हैं, कल आपका लेक्चर 1 है। कल लेक्चर 1 आपका कोई टेस्ट मौजूद है, देखिए इसके अंदर आपका एक टेस्ट वेट कर रहा है, ये रहा। आपको खुद टेस्ट चेक करना पड़ता है कि मेरा कोई टेस्ट है इस लेक्चर का। फिर आप सिंटेक्स पे जाते हैं, तो सिंटेक्स में आपके पास सिंटेक्स का सारा मटेरियल आपको इसमें मिल जाता है। सिंटेक्स के ऊपर कोई टेस्ट है नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। स्टेट वर्ब्स इसका ये रहा, कोई टेस्ट है, ये रहा, होना चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब टेस्ट, मटेरियल भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो यहाँ भी मिल जाता है, वरना ये लेक्चर्स आपके पास ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हुए हुए हैं। आप कभी कोई लेक्चर मिस कर जाए, आप मैंने फॉर एग्जांपल आपका स्टेट वर्ब का चैप्टर मिस हो गया, आप जाकर मेरे स्टेट वर्ब्स के चैप्टर को सुन लीजिए, ठीक है ना, और उसका टेस्ट भी दे दीजिए, ये रहा इसका टेस्ट। तो टॉपिक वाइज आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन आपको खुद जिम्मेदारी के साथ टेस्ट में अपेयर होना है। ये WH वर्ड पे टेस्ट, जब आप अपने पूरा बेसिक लेवल मुकम्मल हो जाता है ऑलमोस्ट 3 वीक्स के अंदर, 4 वीक्स में, तो फिर आप अपने ग्रैंड टेस्ट में अपेयर होते हैं। 1 घंटे का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, और अभी तक तकरीबन 700 प्लस बच्चे इस साल अपेयर हो चुके हैं इस टेस्ट के अंदर। फिर आप टेंसेस और मॉडल्स पढ़ते हैं, ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई है तो अलग से फोल्डर बना दिया है, वरना टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल सबके लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन टेक्स्ट, पैसिव, प्रोनाउंसिएशन सेशन, वोकैबुलरी सेशन, सबके लेक्चर्स यहाँ पर आपको सीक्वेंस में मिल जाते हैं। ये एक अच्छी बात है, जो यूट्यूब के लेक्चर्स होते हैं वो सीक्वेंस में नहीं मिलते, ठीक है ना, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिल रहे होते, अलग अलग सीक्वेंस आ रही होती है। तो लेकिन गूगल क्लासरूम के ऊपर आपको बकायदा प्रॉपर सारे सेशंस मिल जाते हैं, ठीक है। गूगल क्लासरूम क्लियर हो गया आपको। सर इस कोर्स को करने का कोई मकसद, you if you want to become fluent in English language or in English, so this is the course for you. But if you want to earn from this skill, because language is a skill and this is the most demanding skill in Pakistan. मैं आपको जैसे एक मिसाल दूं, अभी मेरी क्लास चल रही है आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं अभी इसी दौरान तकरीबन 50 मैसेजेस और आए। सो 1 घंटे के अंदर 50 मैसेजेस लोग करते हैं, लेकिन उन 50 में से 40 गरीब होते हैं बेचारे, और 10 लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं। 10 में से 5 होते हैं ऐसे जो कहते हैं नहीं हम वाकई कुछ करेंगे, एंड दे लॉक देमसेल्फ इन अ केज, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो वक्त को जाया करने के लिए हमारे पास आती है। पढ़ने वाली कौम हमारे पास 5% होती है। ये एक तल्ख हकीकत है ऑनलाइन वर्किंग की, ठीक है ना। लोग समझते हैं बहुत पैसा कमाते हैं लोग, लेकिन इस पैसे कमाने के पीछे कितने लोगों की मुख्तलिफ आदात को, एटीट्यूड्स को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसमें से सबसे बड़ा एटीट्यूड यही है कि दे बिकम ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, they click on ads for nothing, they join WhatsApp group for nothing, they don't come in a demo class even, they just want some material because they cannot afford. So उन लोगों के लिए फिर YouTube के lectures होते हैं, तो वो YouTube के lectures से अपनी चीजों को कवर अप कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन माइंड सेट से। अपना एक माइंड सेट बना लें पहले बेटा, देखें ये माइंड सेट जो बना लेगा ना वो कामयाब हो जाएगा। माइंडसेट क्या है? बी ऑप्टिमिस्टिक। बी ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? रोशन पहलू रहे, पुरुमीद रहे, पता नहीं मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो कर ही नहीं सकती, ये डोंट बी पेसिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक। आई एम श्योर यू कैन डू इट। आपका टीचर आपसे ये कहता है आई एम श्योर यू कैन डू इट, मैं यकीन करता हूं, मुझे यकीन है आप कर सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सर 20 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, इट्स ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लैंग्वेज कैन बी लर्न एनी टाइम। आपको पता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है
बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुस्तकिल मिजाजी, मुस्तकिल मिजाजी, perseverance is the key to success. I just want you to be regular. बस रेगुलर क्लास लें, आप देखें थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। और जहन में एक मैकेनिज्म सेट कर लें। पहले आएगी फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है रवानी, ठीक है ना। फ्लुएंसी का मतलब होता है रवानी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी दुरुस्तगी, दुरुस्तगी मीन्स सही बोलना। ये, और इसके लिए बहुत वक्त लगता है। हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल, हो सकता है दो साल, ठीक है। तो थिंग्स टेक टाइम। फ्लुएंसी आ जाती है 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते। अब ऐसी फ्लुएंसी का क्या फायदा जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स हो? ऐसी फ्लुएंसी का क्या फायदा? What is the use of that fluency where you have grammatical errors, where you have pronunciation mistakes, you are mispronouncing words? तो फ्लुएंसी तो ले आइए, कोई तारीफ नहीं करेगा, याद रखिएगा। आपको पता है आइल्स के पेपर में फ्लुएंसी के मार्क्स नहीं होते, हाँ पीटीई के पेपर में होते हैं। आइल्स के पेपर में, जो अब्बू जान है सारे पेपर्स के, आइल्स के पेपर में फ्लुएंसी के मार्क्स नहीं है। क्योंकि फ्लुएंसी के अंदर वो आपकी क्या देखते हैं, आर यू प्रोनाउंसिंग वर्ड्स करेक्टली, आर यू मेकिंग अ करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, आर यू मेकिंग अ करेक्ट सेंटेंस, इज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट। ये चीज वो आप चेक करते हैं। अगर इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो लोग आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, दैट यू स्पीक गुड इंग्लिश, यू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मेरा कभी भी फोकस अपनी फ्लुएंसी में नहीं रहा एज अ स्टूडेंट। आई ऑलवेज वर्कड ऑन माई वोकैब्युलरी, I always worked on my grammar, I always worked on my pronunciation. Then I must speak correctly, I must speak good English. Fluency is another thing, speaking good English is another thing. Good English has no link with fluency. ये हम लोगों ने बना लिया जैन, फ्लुएंसी आ जाए, अचार डालोगी ऐसी फ्लुएंसी का, go straight, take a left turn, there you will see the school and there is a park. अब ऐसी फ्लुएंसी को कौन तारीफ करेगा? मैंने ऐसे लोगों को सुना है। कल मेरे पास एक वॉइस नोट भी आया था, मैंने उनको सुना तो मुझे अजीब सा लगा। कह भी रहे फ्लुएंट, शी वाज फ्लुएंट बट शी वाज मेकिंग ब्लंडर्स इन हर कॉन्वर्सेशन। आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड। If you are making blunders in your spoken and you are speaking fluently, nobody is going to appreciate you, and that you are not going to get better score in IELTS speaking. So what you have to focus, fluency first, क्योंकि ये तो 3 हफ्तों में आ जाएगी। जिंदगी भर उसके बाद किस पे काम करना है बेटा? एक्यूरेसी। माइंड सेट बना ले अपना, फ्लुएंसी आ जाए सर फिर एक्यूरेसी में काम करोगे। लेकिन अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि नहीं मैं सही पहले बोलूंगी, तो वो फिर आप कभी बोल ही नहीं सकेंगे, राइट। इफ यू जस्ट, कुछ मैंने बच्चों से रिव्यूज लेता हूँ, तो वो बेटा आपने अभी तक बोलती थी, आप खामोश रहती है। सर बस मैं चाहती हूँ मैं सही बोलूं, गलती ना हो। क्यों? मौत आ जाएगी बेटा गलत बोलने से। नहीं सर मौत तो नहीं आएगी, तो बोलो बेटा, क्योंकि अगर नहीं बोलोगे तो फिर मौत तो आनी है। तो बेहतर ये कि मौत आने से पहले बोलना शुरू कर दो। लेकिन गलत बोलोगे कोई टेंशन नहीं है, कोई हंसेगा नहीं, कोई रिमार्क्स पास नहीं करेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, दैट नोबडी पासेस रिमार्क्स, नोबडी मेक्स फेसेस, जो अक्सर फिजिकल क्लासेस में हम लोग सामना करते थे। लड़कियां बेहोश हो जाती थी, सामने नहीं आती थी। सर वो हंस रहे हैं, सर वो दांत निकाल रहे हैं, सर वो मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कोई कहानी नहीं। क्लियर? ये 4 डायलॉग्स आपके लिए मैजिकल हैं। दीज आर 4 मैजिकल सेंटेंसेस। इतने मैजिकल सेंटेंसेस है ये, आप यकीन करें जिस इदारे में मैं पढ़ाता था, आज उस इदारे की दीवारों पे ये जुमले लिखे हैं। सिर्फ किस वजह से कि वो ये देखते थे यार इसकी क्लास का बच्चा, हर बच्चा अंग्रेजी बोलता है,
ऐसा क्या करता है? तो हमने कहा जादू करते हैं हम। जादू क्या है? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। पहले दिन से नारा लगाता था बच्चा, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बेहतर होती जा रही हूँ, आई एम द बेस्ट। ये 3-4 सेंट, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और अपने मोबाइल फोन पे चिपका ले, मोबाइल फोन पे चिपका लो, सही है। और बस ये सोचना शुरू कर दो, मैं बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, और ये बोलते रहो, बार बार रिपीट करते रहो। इससे क्या होगा? आपको बोलना आ जाएगा, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम द बेस्ट। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम द बेस्ट। बस ये बातें आप रिपीट करते रहे, आप देखिए जादू है। आमिर खान कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो क्या होगा? एवरीथिंग इज वेल नहीं, मुश्किलात को झेलने का हौसला आ जाए। जब आप ये कहते हैं ना आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो इससे क्या अंग्रेजी आ जाएगी? बस अल्लाह पाक असबाब बना देंगे, बना दिए हैं। ठीक है। पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सर मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ? बस एक काम शुरू कर दो, 3 हफ्ते तक एक काम करते रहो, लिसनिंग, 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 लिसनिंग। लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग। नहीं सर मुझे बस ऐसी क्लास चाहिए मैं बोलूं, तो आओ चाइनीज क्लास, मैंने एक चाइनीज लैंग्वेज की क्लास में बिठा दिया लड़की को। मैं कहा बोलो। सर रुक तो जाए, सुनने तो दीजिए। नहीं ना बोलो ना, तुम्हें बोलना। सर मुझे नहीं आती ना। तो सुनो। जी सर मैं सुनूंगी। सुनने के बाद उसने बोलना शुरू कर दिया, एक बात को बार बार सुना, बार बार सुना, बार बार सुना, बार बार सुना, तो उसे समझ आ गया। मैं आपको चाइनीज सिखा सकता हूँ। चाइनीज में मे आई आस्क क्वेश्चन को चाइनीज में कैसे कहेंगे? हमें क्या पता सर, आइए मैं आपको सिखा सकता हूँ। चाइनीज लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, नो ग्रामर रूल्स, नो ग्रामर रूल्स। आप इसी तरह से इंग्लिश भी सीख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा, मैं आपको हर जबान सिखा सकता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लिख रहा हूं आपकी स्क्रीन पर आएगा। मे आई कम इन, मैंने क्या लिखा? मे आई कम इन, सही है, क्वेश्चन मार्क। मैं कहा भाई मे आई कम इन, जरा इसको बोल के दिखाओ, चाइनीज में कैसे बोलो? आई वॉन्ट टू लर्न चाइनीज। चाइनीज सिर्फ बोलने से आती है, सुनने से आ जाएगी आपको। आइए अब आप देखें, आप चाइनीज में जा रहे हैं, ये रही चाइनीज, चाइनीज ट्रेडिशनल। 我可以进来吗？我可以进来吗？我可以进来吗？我可以进来吗？ 10 दफा सुनोगे बोलना शुरू कर दोगे। 我可以进来吗？我可以进来吗？ सर मुझे चाइनीज नहीं, मुझे पंजाबी सिखाया, स्पेनिश सिखाए सर आप।¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? अब याद करो, ¿Puedo pasar? पेरो पसा, ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? पोरो पसा, ¿Puedo pasar? हो गया याद? ¿Puedo pasar? सुन ले, लिसनिंग इज द की। हम सुनते नहीं है। आप किसी भी जबान को सिर्फ सुनना शुरू कर दें, बार बार सुने, आप देखिए आपके वो आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस को आप सीख सकते हैं। मैंने कहा मे आई कम इन, मुझे अच्छा सर गुजराती में, मैं गुजराती भी आपको सिखा सकता हूँ। आप इसमें जो जबान सीखना चाहें वो आप सीख सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, देखिए गुजराती में बोल के दिखाएं तो मजा आएगा। હું અંદર આવી શકું હું અંદર આવી શકું थोड़ा हमारी उर्दू से मिलती जुलती है, हूँ अंदर आवी। હું અંદર આવી શકું अब बताइए, कैन ऑल लैंग्वेजेस बी लर्न बाय लिसनिंग? आप मुख्तलिफ जबान को सीख सकते हैं। अच्छा अब आप फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश की
आपके पास टेक्स्ट है, आप उसकी उर्दू करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। मैंने कहा उर्दू कर दे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। अब आप कुछ भी लिखे यहाँ पर, आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो बच्चे पहले मुझे टेक्स्ट भेजते थे, सर इसकी जरा ट्रांसलेशन बता दें, तो मैं उनको गूगल ट्रांसलेटर का बता रहा हूँ, मैं कहा वहां लिखो तुम्हें ट्रांसलेशन मिल जाएगी। आई बात समझ? दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो बेटा द फर्स्ट की इज, सबसे पहली आपके पास की क्या है, दैट you have to start listening. Listening is the key. और जब आप लिसनिंग स्टार्ट करेंगे तो देखें कुछ वक्त में आप बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन जब आपकी जबान खुलने वाली होगी, मैं उससे पहले काम कर दूंगा, मेरा वादा है कल से काम शुरू कर दूंगा। आई विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। 6 दिन का एक असाइनमेंट दूंगा, आप अपना आप देखिएगा, आप प्रोनाउंसिएशन पे काम शुरू कर देंगे। आप फ्लुएंसी आपकी 3 हफ्ते 4 हफ्ते में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डिस्कशन क्लास है, जब आप उस डिस्कशन क्लास को अटेंड करेंगे, वो फ्लुएंसी में काम करते हैं। हम किस चीज पे काम कर रहे हैं? हम आपके प्रोनाउंसिएशन पर। आपको एक टीचर भी अलॉट हो चुकी है जो आपकी हेल्प करती है इन प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। रीडिंग, सर मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूं अच्छा, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। तो बेटा फिर आप एक काम करें, आप रीड करना शुरू करते हैं। फेसबुक के अलावा आप कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ते? हाँ सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आई डोंट रीड एनी अदर बुक एक्सेप्ट फेसबुक। तो आपको जो चीज लिखना है, आप 1 महीने बाद मैं आपको कुछ रीडिंग बुक्स रेफर करूंगा कि आप इसको पढ़िए, और कल भी मैं आपको कुछ स्टोरीज रेफर करूंगा, आप उसको रीड करें। रीडिंग से आपको राइटिंग आती है। लेकिन हम लोग कहते हैं राइटिंग सिखा दो। भाई क्या सिखाओ? लिखना सिखाओ। तुम्हें रीडिंग तो करते नहीं हो, तुम लिखना सीखना चाहते हो। इफ यू आर अ गुड रीडर यू विल बिकम अ गुड राइटर, इफ यू आर अ गुड लिसनर यू विल बिकम अ गुड स्पीकर, एंड इफ यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग यू विल नेवर बी गुड एट स्पीकिंग। और आप कोई सा भी मॉड्यूल उठा ले बेटा, इन चारों मॉड्यूल्स के अंदर एक बात कॉमन होती है, आपको हर जगह ग्रामर का ख्याल रखना है, वोकैबुलरी का ख्याल रखना है। ग्रामर क्लास आपको मिलती है बाकायदा, वोकैबुलरी क्लास भी हम आपको दे रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन क्लास भी हम आपको दे रहे हैं, फ्लुएंसी के लिए हम आपको डिस्कशन क्लास दे रहे हैं। हमने आपके हर मॉड्यूल पे काम किया हुआ है, एंड दिस कोर्स रियली helps 120%, it helps you to speak fluent English। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप मुझसे डायरेक्ट शेयर करें, सर दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। बट प्रॉब्लम से पहले आपको रेगुलर होना पड़ेगा। आप रेगुलर रहकर, ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूं ताकि आपकी हर प्रॉब्लम जो है ना वो दूर हो जाए। आपकी क्लास चल रही है ग्रामर, ठीक है ना, आप ग्रामर क्लास में है, आप ग्रामर क्लास लीव कर गए, लाइट चली गई, फॉर एग्जाम्पल 3 से 3:30 आपने क्लास ली, आप रात में ज्वाइन कर लीजिए 8:15 8:20 पे, तो वहीं से आपकी क्लास जुड़ जाएगी। क्योंकि हमारा जो लेक्चर होता है वो एक एस्टिमेटेड होता है, हम एक ही कंटेंट को पढ़ाते हैं और उसी स्पीड के साथ पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर कभी क्लास 10 बजे आपने लिया, पुप्पी आ गई, क्लास डिस्कनेक्ट कर दे, पुप्पी के लिए चाय बनाए, पुप्पी मोस्ट वेलकम। ये नहीं कि इस वक्त क्यों आ गई, क्लास चल रही थी, इट्स ओके, आप दोपहर में ले लीजिएगा। आप 10:30 बजे आपने डिस्कनेक्ट किया, आप 3:30 बजे दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको वहीं से आपकी क्लास मिल जाएगी। कहाँ मिलती है ये ऑफर बेटा? ये सिर्फ SKH पे मिलती है। स्पोकन क्लास है। अच्छा, ये 2 क्लासेस को कोशिश किया करें वक्त पे ज्वाइन करें, क्योंकि इसकी एक थीम होती है जो स्टार्ट से एंड तक चल रही होती है। मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट शुरू होगा और आखिर में खत्म होगा, तो अगर बीच में आएंगे तो समझ नहीं आएगा कुछ। तो ग्रामर और स्पोकन को टाइम पे ज्वाइन करने का। डिस्कशन क्लास 11 बजे आप चाय बना रही है, नो प्रॉब्लम, बना दी रहे, चाय बनाए आराम से, 11:10 11:15 पर आ जाए, बस एक क्या होगा, वोकैबुलरी बस हो जाएगी। शुरू के 10 मिनट में टीचर वोकैबुलरी शेयर करती है, फिर वो अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया, आप 11:15 बजे आए, फिर कोई बेल बजी, आप इट्स ओके, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने थोड़ा सा सुना, आपने कहा इट्स ओके, चलो भाई आज का हो गया। ऐसा भी आप कर सकते हैं। डिस्कशन क्लास में कब जब भी आने आए, जब भी जाने जाए, नो रोक टोक।
प्रोनाउंसिएशन सेशन में जब आ रहे आए, जब जा रहे जाए। वोकैबुलरी क्लास टाइम पे ज्वाइन करें, टाइम पे लीव करें, क्योंकि वोकैबुलरी क्लास बीच में से ज्वाइन करेंगे समझ नहीं आएगा क्या पढ़ा रही है, क्योंकि हर टॉपिक के ऊपर वोकैबुलरी होती है। मैं वोकैबुलरी की बुक भी आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है? सारी बातें क्लियर हो गई आपको बहुत अच्छे से, ठीक है ना? सो सर आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, तो बस अपना एक माइंडसेट बना लीजिए। माइंडसेट क्या है? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम द बेस्ट। मैंने कहा ना, जिस इदारे में पढ़ाया उस इदारे की दीवारों में ये जुमले लिखे हुए, तो आप भी अपना इसका स्क्रीनशॉट ले, मोबाइल पे लगा लीजिए। होगा क्या इससे? अल्लाह पाक खुद असबाब बता देगा। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ अपनी रियल लाइफ से। गरीब आदमी हूँ, गाड़ी नहीं लेने की हैसियत, लेकिन हर एक गाड़ी को देखकर ये कहता था एक दिन मैं इस गाड़ी में सफर करूंगा। आज गाड़ियों की लाइन लगी हुई है मेरे घर के आगे, जहां जाता हूँ गाड़ी में जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर के साथ आती है। ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अल्लाह ने असबाब बना दिए, करीम को भेज दिया, इन ड्राइव को भेज दिया, उबर आ गई, एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट की वाइट कैब आ गई, एक से एक जबरदस्त ड्राइवर के साथ आती है। हो गई ना भाई, ख्वाहिश पूरी कर दी अल्लाह ने, जो सोचा था वो मिल गया। अब अल्लाह ये थोड़ी नहीं कहा था अपनी गाड़ी में सफर करेंगे, भाई गाड़ी में सफर करेंगे, गाड़ी मिल गई हमको। आता है, एयर कंडीशन चल रहा होता है, एसी चल रहा होता है, ये जबरदस्त। सो इंसान जो सोचता है बेटा, याद रखिए वो जिंदगी में हो जाता है। अच्छा सोचेंगे, आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छा होगा, ठीक है? आई एम साइनिंग ऑफ। आपकी डिस्कशन टीचर आ चुकी है, आपके माइक्स आप ऑन हुए हुए, मैंने आपको हर चीज सिखा दी है। अब आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आप हैंड रेस करेंगे। आई एम साइनिंग ऑफ एंड मिस परी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum class. Am I audible to you, students? Assalamualaikum, Yes. ma'am. Walaikum assalam, ma'am. Yeah. How are you students doing today? Walaikum salam. Alhamdulillah, good. Uh-huh. Good to know. Okay, so let's start with the introduction today. Okay, just let me know when the screen. Yes, ma'am. Okay, so let's start with the introduction. Is this if the screen is visible? So let's start. Okay, Mariam, is it visible now? Okay. Okay, so I'm introduce myself first, so that you'll also get to. Okay, Mariam, that's great. Okay, this is like a help guide for you all. So sentence by sentence, you can read it, and you'll just try to fill in the blanks. It's like a helpful guide for you to introduce yourself. I'll go first. You can say like, my name is Perihan Safdar. I come from Pakistan, whatever city you are from, Lahore, whatever your age is, how many members are there in your family. And when you come, there's like, why are you learning English? And I study English because that's the reason. Like, you'll also know what your goal is. Why are you learning English? You'll be sharing it within the class and to all the students too. Okay, so let's begin. Just raise your hands one by one. I'll call you out and let introduction. Okay, just do not hesitate. I'm Perihan Safdar. I was born and raised in Qatar, and I've currently moved to Lahore. I have done my master's in English language and literature, and I've been teaching here for more than 1 year now at SKH, the English language. Okay, so yes, students, I want you to raise your hands one by one, or if you want me to call you out, I can do that too. I can call out your names, so you can start with the introduction. Are you students comfortable? Are you feeling comfortable to speak and start with the introduction? Yes, who wants to go first? There's Sabir, Amna, Aruj, Aisha Sattar, Aisha Tariq, anyone? After the introduction, we're going to move on to the discussion slide, okay? Yeah, Aruj is ready. Yes, Aruj. Assalamu alaikum, Aruj. Walaikum assalam. Yeah, how are you, Aruj? I'm pretty good. Okay, good to know. So yeah, we can start with the introduction. Hi, my name is Aruj.
I come from Faisalabad. I come from Pakistan, live in Faisalabad. My age 24. There are 7 people in my family, and I am in student from university. My major is I have no idea. My Major favorite subject is your like subject that you're enrolled in at the university. Like for example, I was a student of English literature. What was your major? Is your major? we are Okay. we had honors, and my favorite subject is English. My hobby baking, and in my free time, I'm also enjoy baking, and I disliking food. Anything you don't like, yeah, you dislike or you do not like, maybe hypocrisy you don't like fake people, you do not like being around fake people. Could be anything. You don't like and people that annoy you or anything that you dislike. Maybe a food. You can talk about a food. I You can I name don't the like food. it for Hmm? I don't know. Okay, that's okay. It can be tricky sometimes. My Okay, yep. favorite food, sweets, cakes, uh, and my drink nothing. I Uh-huh. like movies, watch any movies and Mhm. dramas. My favorite singer, no, I don't like singing and music. Okay, okay. And next, something good from place. Something Yeah. any summer, winter, they which Okay. place. And I study English because I like speak English. Mm-hmm. You like I can speak English. I can speak English. It's mm-hmm. kind of Yeah, okay. I have been learning English from since Yeah, since evening and time. okay, like I would like to job because baking. I like baking and job everything baking and baking. okay, so you want to be a chef? You would like to be a chef? You good at cooking and baking? Online Okay, working okay, online. Okay, okay, SEO. okay, inshallah. Okay, very well, Aruj. It's really good to meet you. Akal. And yeah, I'll start with the discussion, and inshallah, I'll be hearing out more from you. Yes, anyone else who would like to go with the introduction, who would like to introduce themselves? It's important and it's not compulsory to answer all of them. Like you can also go with some of the sentences. It's not important to introduce the whole entire guideline that has been given to you. It's okay if you want to just give a short introduction. And also if you have your own introduction, you could like use it, you can talk about it. You introduce it according to your own comfort. Okay, yeah, Neelam. Neelam girl, how are Yes, you? Alhamdulillah, ma'am, I'm fine. Good. My name is Neelam Gul. I come from Pakistan. I live here in UAE right now. I am 32. There are 5 people in my family, 3 my daughters, me and my husband. I'm not a student right now. I am a working woman. My major subject is physics. Like I have MPhil physics major subject. Favorite subject is math. My hobbies are going outside and spend time with my family. In my free time, I also Okay. playing like sport, some sports activities. I don't like bad people. Okay. Yeah. My favorite food is food or drink is like fresh juices. Mm-hmm. And I like movies. Sometime like in weekend we spend like we went with the family Yeah. to watch movie.
I don't like anger. Okay. Sometimes I went to the historical places in UAE, very nice park, indoor park. I study English because, Mhm. right now I want to. I also prepare for and when Mhm. I start preparation, I think that my spoken English is not good. That's why Mhm. I joined spoken. Okay, so you want to What? improve your English language, Yes, is spoken yes, English, yeah? yes. You want to be fluent in Yes. that. Okay. I have been learning English just once before. Okay, okay. Okay. Okay, I would like to be like I'm a teacher, okay, but not in the school. I teach students. I give like home tuitions in the evening, 1 hour or 2 hours. Mhm. Okay. Okay, very well, Neelam. It's Thank good to you. know. It's really good to know about yourself. And that was a pretty good introduction. Very well. And yeah, and you're really good. You're doing really good, and you're being confident in speaking about it, as you already mentioned. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah, who is this? Thank you so My much. name is Farah. Okay, you're welcome, Neelam. Yes, Farah, do you give your introduction? Yes. Okay, yes, Amna. After Farah, I'm gonna call you out. Yeah? Okay. Farah, there is a lot on your side. Okay. Hello. Yeah. You can start with the introduction, Farah. Okay. My name is Farah Imtiaz. I come from Pakistan. I live in Lahore. I Mm-hmm. am 37 years old. And there are 8 people in my family. Mm-hmm. My major is mathematics. My favorite subject is maths. My hobbies are reading and cooking. In my free time, I also enjoy sports. Yeah. My favorite food is not my anything is favorite, but I demand Mm-hmm. just all food that give to me to eat will be in good taste. Yeah, got your point. I like movies. No one is my favorite singer. I said sometimes wants to go for outing like historical places. Okay. I because I want to improve my English because I'm interested to move on from Pakistan. I would like to be a Jobian because I want to support my family. Okay. Yes, I started. Okay, very Thank well, you. Farah. You spoke really good. And inshallah, you'll improve on your English language and you all will be fluent very soon. You won't even know how fluent you'll become in a very short span of time. So, now moving on to, yeah, Amna, are you ready? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yeah, Alhamdulillah, how are you, Amna? I'm fine. And what's about you? Yeah, I'm good too. Thank you for asking. Yes, Amna, would you like to First of all, introduce thank you yourself? for giving me this opportunity to introduce myself. Sure. My name is Amna Khalid. I am from Lahore. I did my graduation in BS Economics from Punjab University, Lahore currently. I am doing BX from Punjab University. I belong to a nuclear family. We are 5 members in my family: father, mother, 2 sisters, and me. I have no brother. My mother is a housewife. My father is honest, hard work, self-motivated, and quick learner. I am doing Montessori diploma for GMCI Global Montessori Coaching Institute. I am studying by earning myself. I really, joined this. I am joining new school, the Punjab school. I am continuing the job. My favorite hobby is reading books, newspapering, playing, and I have no favorite singer. I sometimes go to historical places I like because it
parks, enjoys. Okay. 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 Really well, Amna. Amazing. Yes. That's really good to know about you. Inshallah. Okay. Thank you so much. Very excited to have with you. With our Aisha, are you here? Assalamualaikum. How are you, Aisha? I'm good. How are you, ma'am? Yeah, I'm good too. Thank you. Okay, Aisha, let's start with your introduction. Yes. My name is Aisha Sattar and I'm from Islamabad. I currently live in Islamabad. I'm originally from Burewala. My family members include my parents, my 2 brothers, my 3 sisters, and my grandmother. Okay. My hobby, reading, gardening, as it helps me relax. My favorite food, halwa puri, Yeah. korma, biryani, and drink is green tea. My favorite singer, Bilal Saeed, Atif Aslam, Arjit Singh, Jobin Nutiyal, Okay. and sometime I go to outside because it's make my mind fresh. Okay. You love going out. That's good. I would like to become a doctor because it's my passion since childhood. Okay, that's great. And what about the language? About the English? Why are you learning it? What's your goal? Yes, English language because I want to improve my English, and the other reason is that I'm going outside Okay, abroad. because of my career. So that's why You're gonna I move out enjoyed. to abroad. That's why you wanna be fluent in the language, yeah? Okay, very well. Okay, Yes. I just thought that was a great introduction, and inshallah, you'll be fluent. You'll be able to see it through the exercises and discussions we have here. So, okay, anyone else who would like to introduce themselves? Yes? Anyone else? Or maybe we go on to the. Okay. Okay, students, I'm gonna share the slide. Just tell me when it is visible to you all. Is the screen visible, students? Okay, we got a tick mark. You can just unmute yourself and too, okay? That's fine too. You can just unmute yourself and answer me. This is what the discussion in class is for. You do not have to use emojis yourself or raise your hand to let me know if there's an issue that you want to talk about. Okay, so the question is, what is the most difficult of learning English? So any aspect there, you already know that there are 4 aspects. There's listening, there's speaking, there's writing, and there's reading. What do you think is the most difficult part of learning English? Do you think it is the spoken English, or do you feel like maybe reading is more hard, or maybe writing is more hard, or maybe listening? Sometimes we even cannot comprehend what the other person is saying. So sometimes even listening can be hard. So let's see, students, what can you talk about it? What is and also it varies person to person. For one person, maybe reading can be difficult, but for the other person, maybe it's hard. So we all have different difficulties, and let's see what's the hard part for you when you're learning the English language. And also you can talk about it in detail. What is the issue? What do you find difficulty in? Maybe sometimes we don't have enough vocabulary to speak. You can talk about all the difficulties that you have you're speaking English, or while you're linked with the English language. What is your difficulty while you're learning the language? Okay, students, just be comfortable about what is the difficult part, or what are you
what is your obstacle to learning this language, the English language? Okay, just raise your hands one by one, and let's talk about it. Let's have a discussion about this language, that what is the hard part and how you can resolve it, inshallah. Let's have a discussion about it. Take your time and then raise your hands. I'm going to call you. Yes, students, did you get me? Did you understand what I was speaking about? Or do you want me to elaborate it a bit more? If you find it if you find it difficult to comprehend, just let me know. I will try to explain it to you again. Okay, students, are you ready? Raise your hands, whoever is ready. Yes, students, do not hesitate, okay? आपने बस इतना सा फिर इतना सा बताना है, इतना सा आंसर करना है कि आपके लिए हार्ड क्या है इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हुए. Is it speaking that is hard? Is it reading? Is it anything that is hard for you? कि आपके लिए क्या मुश्किल है? And also, you can further elaborate it कि what is it while you're speaking? कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्पीक करते हैं तो हमें वोकैबुलरी नहीं आती, या फिर हमारे पास इतना कुछ बोलने को होता है बट वी aren't able to speak our thoughts out. We're not able to talk yes, or exactly. Vocabulary नहीं होती speaking के लिए ना. Okay, fine. Yeah, you want to answer this question, right? So you can try to explain your issue in the English language, okay? Let's talk Yes. about it. Yeah, I what are have your no I have no vocabulary to explain my answers in English. Okay, and what other issues do you face while you're learning the language? Sorry. Yeah, what are the other issues or other obstacles that you face while you're learning the language? Any other issues or anything difficult for you in the language? No, nothing is more Okay, difficult. Main issue is okay. So you vocabulary. think like maybe I forget what I want to speak and not have the words to explain yourself. And sometimes you cannot explain yourself because of the lack of vocabulary. Is that what you think? Yes. Okay, Farah. Okay, very well, Farah. It was great how you tried to explain what your issue is. And obviously, you'll be learning. The good thing is that you have a different class for vocabulary learning. So that's a good thing. You can learn the vocabulary and you can also expand it. Okay, Farah. Okay, Farah, just stay here. I'll be sharing another slide. We have another discussion topic too. So I want you to stay here. Yes, next student, Aruj. Yes, ma'am. It's difficult for me to read, write, and speak. Okay. So while you're speaking, could you elaborate a bit more? What is it that is difficult for you and how do you tackle it? Are you trying it yourself? Are there any practices that you've done at home with the English language? No. No, you haven't? Okay, so you find like all of the four parts as difficult for you, yeah? All of the four aspects of English language are difficult. Ma'am. Yeah? Okay, okay, Aruj. Okay, Aruj. It is good that you try to explain your problem here. Don't worry, we will all of the tutors on SKH is gonna help you out. I think the grammar aspect of yours will also be perfect. And also we have discussion classes. So do not worry about the spoken part. Inshallah, you'll be able to very fluently speak about any topic. Okay. So now moving on to Neelam. Yeah, Neelam, girl. Yes, actually, sometimes when I talk with someone, I'm little bit confused. Okay. Also, there is a problem with the vocabulary. But when I Mhm. write sentences or talk with the teachers or as my all three daughters are in preschool, okay.
But whenever I talk with the teachers and everyone, everything will be fine. Okay, but little mistake. And when I write some email or some message to the teacher, it's 100% perfect. But I like one thing. Okay, so you think there are some aspects that you want to improve on, and there are some aspects of the English language that you are good at. Yeah, there are some aspects that you need to work on. Well, that's good. That's like self-awareness you've got there. Moving on to Hamna. Yes, ma'am. I can't speak English fluently. That's why. Not so you I feel like have you can. I have not a lot of vocabulary to speak English. Okay. So you do not have enough vocabulary to speak in English. Okay, Hamna. So most of the students have the same issue. And what about reading and writing and listening? Do you find them easy? Do you find them Yes, comparison? Yeah. yes. Reading and writing easy, but speaking I can't speak in fluently. Okay. Somebody else. Okay, I got you, Hamna. Okay. Very well that you talked about what the issues you have and what is the hard part for you. Okay, anyone else who would like to speak and who would like to talk about the issues that they face while learning the language? Anyone else? I want to learn language because I improve my language speaking, English speaking, and my vocabulary. Okay, you want to improve your vocabulary and your English Speaking. your speaking. Okay. Okay, Hannah. Yes. Okay, yes, students, we haven't really spoken about why are you learning the language. So let's learning the English language. What is your goal? Yeah, Farah? Hello. Because I'm interested in IELTS, Okay. and I Very want, nice. Mhm. and I also want to improve because in schools we can use English with students. Yeah. So you can That's speak the why. English language at school, yeah? And also you want to improve your IELTS, yeah? That's the reason? Okay, Farah. Very well, Farah, that you talked Yes. about what your goals are. Yes, Sabir, Fatima, why are you learning the language? Ma'am, I like to speak English, and in future I plan to go in other countries like abroad. But Mm-hmm. speak at that time. Ma'am. Okay. Okay, Abir, Fatima, that's a good reason. Now moving on to Hamna. Yeah, Hamna, have you done it? What is your reason to learning the language? Because I like language, and my goal Yes, what is your I, goal? my goal to improve my language speaking. Okay, your English speaking. You want to improve your fluency in the English Yes, language, yeah? yes. Okay. Okay, Hamna. Yes, Mariam. Assalamualaikum, ma'am. Yeah, walaikum salam. I want to improve my English because my goal is to do jobs in freelance platform, and I think it is uh, important to be fluent in English. Okay, That's you why. also think that English language has its own importance. That is very true. English language is very important. Yes, Okay, ma'am. Mariam. Yeah, and The part of learning English is grammar. do you think the Um, grammatical part, the grammatical aspect is hard? yes, ma'am. Okay. It is hard. Yeah, the rules can never be easy. Obviously, you'll have to
you'll have to learn the rules of any language. Okay, Mariam. Is that it? Okay, Mariam, very well. That was great. Yes, Aisha Tariq. Ma'am, because I want to teach in a renowned institution, so I want to learn English for the better. Okay, you want to learn English? Because you want to teach it, teach at an institute. Yeah, Aisha, that's the reason. Yes, ma'am. Okay. Okay, very well. Very well. So how long, okay, Aisha, so how long have you been trying to learn the English language? Are you putting in your efforts? Any practices you're doing personally? No, nothing. Yet no. Okay, so this is like your first time to trying to learn the English language. Okay. Okay. Yes, anyone else who would like to tell us the reason that why are they learning the English language? Anyone who haven't done it yet? Uruj, have you done Yes, it? ma'am. I have done. Okay. Okay. So Fatima binte Hassan. Okay, Hafsa, Neelam, or anyone who would like to, I can change the slide now. If everyone has done it, so I'm going to change the slide and move on to another discussion topic. Please change the slides. Okay, students, one second. I have another one. Okay, tell me when the screen is visible to you all. Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay, so this is the question topic that we're going to discuss. As you already know that recently we just came across the weekend, and it's only been the start of the week, the Monday. So what have you done on the weekend? And usually what do you, obviously we all wait for the weekend to and we're excited for the weekend. So what is weekend activity? What are the activities that you do? What are the plans that you have for the weekend? And also sometimes you don't have any plans, and there are also unexpected plans that come up. We don't even know. Sometimes it's the arrival of the guest that is unexpected. It could be any unexpected plan to come up too. But other than that, what are your hobbies, or what are you excited for? What are the things that you get excited for, or you plan the weekend? Do you have any plans for this weekend, for this coming weekend? And also, you can talk about how was your previous weekend? What did you do the last weekend? Okay, you can share your activities that you've done uh, in the recent weekend. Take your time and then raise your hands. I'll call you out. All you just have to share what did you do on the weekend, or maybe any activities that you would like. We do not have enough time to do many things because of the responsibilities. So we try to put it off until the weekend. We try to plan our weekend with the activities that we aren't able to do during the week. So you can share them, or you can share any plans you have for the upcoming weekend. Okay. Okay, I'll be waiting. Raise your hands. Anyone who's ready to speak. Okay, Aisha Sattar. Yes, Aisha. Ma'am, cook dinner with your family on weekend. It's my favorite activity. Okay. You like to cook Yes, ma'am. food for your family? Yes, ma'am. This is the best way to spend time together and with your family. Everyone is involved in making meal and then sit down together and enjoy it together. Yeah, that's true. That's like a very good family time. It's like a good company we have. जी. That I agree.
Okay, and how Yes, was your previous weekend? How did it go? How was your last weekend? What did you do? Ma'am, cooking? You cook food? Yes, ma'am. Okay. And you had a family time, yeah? A great family time. Yes, ma'am. Okay, Aisha, very well. You spoke really good. Now moving on to Aruj. I love baking and I'm baker. Eat more and to many cupcake for child distribute the cupcake. I will spend weekend with my family. I will Yes. spend weekend with my family, and I like to spend with them. And my Yeah. previous weekend did good. I spent time with them. Oh, okay. With your family? You spent time with your family? Yes, ma'am. Okay, very well. That's amazing, Hamna. Okay. Yes, anyone else who would like to talk on this topic? Your favorite activity, your favorite weekend activities. Yes, Mariam or Abir Fatima or Hafsa, anyone who would like to speak? Okay, students. I feel like today many of the students are hesitating, and that's okay because it's the beginning of the course. Yeah, who's this? Farah? Yeah, Farah. Yeah, sure, Farah. Do you want to speak on this topic? Go ahead. Yes. In my first priorities at weekend is take to sleep for a long time Okay, to because rest, to relax. it is not possible during the week. So you don't have enough time to relax and to sleep, yeah? Yes, Okay. because I'm teaching in a private sector and So you have a lot of from 6 a.m. to 6 a.m. to 3 p.m. I was busy there. Okay. You have work, okay. Okay, Farah, And because of there the is also a work. lot of work which I have to done on Sunday. Yeah. Okay, so even on or even on the weekend, you have a lot of work to complete, yeah? Yes, and something unexpected happened, which has also faced. Yeah. Yes, that is very true, Farah. I do agree with it. Sometimes even unexpected plans do come up. Yes. Okay, Farah, very well. That was amazing how you explained about this topic. You're welcome. Yes, anyone else who would like to speak? Yes, students? Okay, let me change the topic. I think most of the students have done it. So let's move on. Okay, this is the topic. Is the screen visible? Yes, just let me know when the Yes, screen ma'am. is visible. Yes. Okay, so this is a very simple topic and a simple question. Name three things that makes you happy. Okay, so you'll talk about three things that make you happy. It could be anything. Having a dinner with my friends, to meet up with my old friends. It can make us happy, and it's not important that you only speak about three things. Obviously, there are many things that you can point out here that makes you happy. Maybe watching the sunset, maybe spending time with your family. It could be what else could make us happy? Humans can be happy very easily. So there are many things that can come up in your mind. Okay, achieving a goal can also make us happy, achieving a goal that we set for ourselves.
Okay, so just you can talk about the things that makes you happy. Okay, and the list goes on. I know there are many things that can make us happy, but you can try to talk about anything that makes you happy and why. How does it make you happy and why does it make you happy? So let's, yeah, Hamna, do you want to speak out first? Would you like to? Yes, ma'am. Okay, sure. Go ahead. Having gup shop with my family and making food. You can say And- having a chat, and, having a and, fun time, and making a makeup, doing makeup. Okay, you like putting on makeup? Yes. Okay, so how do you feel like after having a makeup on? How do you I feel very You happy. feel good? Okay, you feel very happy. Okay, spending time with your family makes you happy? Why does it? Why does it make you feel happy? Because when I do very gup shop, that makes Yeah. me happy. Okay. So you can say I talk to them, or you can say I have a chat. Okay. When you're using the word, you can say I love to talk to my family. I love to chat with my family. Okay. I love to spend quality time with my family. Okay, Hamna, very well. That was amazing. Yes. Okay. And also, Hamna, would you also like to talk about things that make you unhappy or make you sad? What are the things, 3 things that makes you No, I unhappy? don't think. You don't get Yes. unhappy when there is a fight, or maybe a friend gets maybe a friend fights with you. Do you get unhappy at that? Or maybe sometimes when the food does not turn out good. Anything that there are a million things that can make us unhappy. No, I Think don't about it. think. Okay. Well, you're a very positive person then. Okay, I'm now very well. So yes, Neelam. Okay, students, I want you to think of three things that makes you happy, but also 3 things that makes you Hello. unhappy and makes you sad. Okay. Yeah, Farah. Farah, you can raise your hand. I'll call you out. Okay, when it's I your don't know turn. how I Is have that to fine? raise hand. You don't know? Okay. So there's a reaction at the bottom. There's a, yeah, you see that? You can click on the icon, and then there's gonna be a raise hand written in the bar. Yeah, you could do that. Okay. Okay. Yeah, you just try to do it. Okay, so the next student is Neelam Yes, Gul. ma'am. The 3 things that make me happy is like outing, shopping, and spending time with the family. Is UAE, I am like alone with my kids and my husband. Okay, no family member are there, so we mostly in weekend or whenever we free, we spend time together, and it makes me happy. Okay. Also, sometimes when I miss my parents because they are in Pakistan, and once in a year I visited Pakistan. Okay, so sometimes I miss my Yeah. parents, so I feel Yeah. unhappy. Also, sometimes Okay, so you think she's naughty sometimes? Yeah. Yeah, so you think she's naughty sometimes, and it makes you angry, yeah? It makes you Yes. angry. Yes. Okay, Aruj. Okay. Okay, very well, Aruj. You spoke really good. Next student, Kulsum. Hello, Assalamualaikum. Yeah, walaikum salam. How are you, Kulsum? Fine, Alhamdulillah. And how are you? Yeah, I'm good too, thank you. Yes, Kulsum. Yes, there are a lot of things that make me happy. Sometimes when we go to my mother's home and
my when we together, my brothers and sister, we talk about to our childhood. So this thing make me happy, and sometimes we go outside for shopping or dinner. This thing also make me happy. And sometimes we saw the old picture of my children. That thing is make me happy. And three things Yeah. that we not be happy when I remember my grandparents. Yeah. So when I'm childhood, she told me a stories like tales, fairy tales. And so when I remember them, so I feel unhappy. And sometimes my children hesitate me and they do not obey my order. Yeah. So I feel sad, and I angry with Yeah. them. And when my husband do not give me attention, Yeah. so I feel unhappy Unhappy. and Yeah. sad. And Okay, very well, Kulsum. That's amazing. You talked about the three things that you like and three things that you get unhappy about. Okay, Kulsum, very yeah, well. That was good. thank you, thank You're welcome. Yes, Farah I'm sorry, Farah Basra or Basra. Could you pronounce your name for me? Farah Basra. Basra. Okay. Okay, Farah Basra. In first priority that make me happy when I get up at the right time of tahajjud. Okay. It makes Yeah. me a lot of happiness for me. Okay. And second one is that when sudden plans to go for visiting somewhere. Yeah. It can make us really happy to go for outing sometimes. And Yes. also when it's unexpected, I can agree to that. Okay, And sometimes chit chat with old friends. yeah, to have a company with your friends. The moment have I spent together and discuss about them. That was a memorable time. Yeah, that is actually very memorable. Okay, Farah, three things that makes you unhappy or makes you sad. First is that I offer my prayers, but sometimes when I cannot get up at Fajr, the thing is makes me unhappy. A lot of unhappiness for me. I know it can be a lot of guilt. I can understand that. Okay, And second is that my mother has been died, and when I'm seeing that someone is said that my mother is dead for this and this and this thing makes me unhappy internally. I cannot say anything. I cannot say anything, but I feel it a lot of. Okay. Okay, Farah. Yeah. And third is that when we have planned some meeting or going for somewhere, but we can't do it. Yeah. It gets Means canceled maybe sometimes, or it yes. doesn't happen. I can. That's like a great disappointment. I can relate to that. We plan something and it doesn't happen. The plan postpones or the plan cancels. It can be great disappointment. Okay, Farah, that was amazing. That was pretty good. You guys have really interesting things to share. Yes. Okay, moving on to Fatima now. Yes, Fatima. Walaikum Assalam. Yes, Fatima. Yes, how are you? Yeah, I'm good. What about you? Alhamdulillah, I'm fine. Just I love your song. I just love your voice. Just can't name. Oh, thank you so much. I appreciate that. Okay, three things makes me happy when I spend quality time with my family, and when I'm doing online shopping. Yeah. Happy. And sometimes when I cook my favorite food, makes me happy. But three things makes me angry when I put a lot of effort to doing something, but the outcomes are not so well. So
That's Yeah, why it makes me so can relate to angry. that. Mhm. And the second one is when my younger brother disappoints me, which makes me angry. And Okay. the third thing is when Hmm. there's not a lot of things makes me angry, but these two I think most common. Uh-huh. Yeah, okay. And also sometimes it can be hard to like you get blank. When someone asks a question, you can also be blank. So it's hard to think about it. Sometimes it's hard to think about the question. And yes, I can relate to one thing that you said about when we put in all the efforts and the result is not the same. It happens many times in life. You give your all, put your all of the efforts that you got, and the result is not as in comparison to the input that we put. So it can be a great disappointment. Yes, Okay, you are Fatma, very well. That was right, interesting. and I face a lot of this situation in my life, but it's okay. It's fine. Okay. Okay, Fatma. Okay. Okay, very well, Fatima. Yes, anyone else who would like to speak on this topic? It's like very easy. It's about yourself. You can talk about three things that makes you happy and three things that makes you unhappy. I feel like almost everyone has done it. Yes, Mariam or Savi, Kumari or Zumar, Tariq. Yeah, students, would you like to? Kalsum, Aruj, would you like to participate? If you're not comfortable, that's completely fine. Okay, students, let's move on. We have another topic to discuss. 1 second. Okay, this is a good one. Okay, students, if the screen is visible, just let me know. Yes, is it? I have changed the slide. We have another topic. Is the screen visible? Okay, I got a tick mark from Aruj, so I think it is visible. Okay, students. So the question is, or the is, what is your favorite time of the day? And why is it your favorite? Is it the mornings? Is it the evening? Is it the afternoon? Or is it night? We all have a routine that we follow, and sometimes there is a specific part of the day that we look forward to because it is very enjoyable. If you like peace, so maybe some people are into peace. Okay, there is a distortion once again. Okay, so sometimes we love how peaceful the time is, and sometimes no, not us. Like different for everyone. That is what I'm saying. For some person, they look forward to a peaceful time. For some people, they look for a fun time, and so for some people, they try to look for an alone time. So it is different for everyone. So you can share what is your favorite time of the day and why do you like it? What are your activities? What do you look forward to at that part of the day? It could be morning, waking up fresh and doing your morning things, whatever you do. Or it could be afternoon, it could be night, it could be evening, anything. Okay. Okay, Kalsum, I I just read your message. You want to participate? Okay, that's like, can you hear me, Kalsum? Yes, Am I I can audible hear to you. you, Kalsum? Okay, so do you want to did you participate in the earlier topic about the things you like, three things you like and dislike? Did you participate? I want Would to you like to? Yes, I want to participate. Okay, sure. Go ahead, Kalsum. You can talk about that topic. Three things you like or it makes you happy. Three things that makes you happy and three things that makes you unhappy, okay? I already speak this topic. Okay, you did? Okay. So now Yes, let's talk about yes. this one, okay, Kulsum? Let's talk about this topic. What is your favorite time of Ma'am, give me 5 minutes. We offer my salah, Completely then fine. I back. That's completely fine. Sure, go ahead. Okay, so Farah Basra. Yes, Farah? Today is the favorite time that when I was coming from the school because it's a really feel comfortable feel that thank God one day Yeah. has passed away Yeah. and good. I can understand. Like today was Monday and you feel like it's good. Yeah. This
dislike it. Yeah. When I Mhm. when I was in school, I can go washroom, but there is no water in tabs, and I Mhm. pain. Yeah, it It's was a really hectic day overall. it's really a tough time, Mhm. and that was not a good. So maybe I think maybe you like the afternoons, right? By the time you come back, it's like afternoon. So Yes, you like the afternoon time because it's like relaxing, and after the work, after all the work that you've done until the afternoon, you get a time, a yes, peaceful time for yourself. Is that the reason? Yeah, you come back home and you have a time to relax. yes, Yeah. yes. So what do you do? What do you do once you come back home? What are your activities? I had lunch and start cooking because today's weather is rainy, and I am starting to make pakoras. Yeah. Okay. Okay, so you try to cook, right? Right after you relax for some time and then you cook. Yeah. Yes, Okay, Farah. Okay, Farah, that was great. That was very well. And also, I really thank you. Yes, and you're welcome. Yes, anyone else who would like to speak on this topic and who would like to share their favorite time of the day and what do you do? It's not compulsory to have a fancy thing. Like you could just talk about maybe I love the afternoon time because I relax. I try to sleep in. And also anything, it could be anything. And I like the night time because it can be peaceful. Everyone goes to sleep and I got time for myself and I read something. Maybe I even watch movie. It could be anything. What is the favorite time of the day and why do you like it? Yes, anyone else ready to share? I'll be waiting here. Take your time, think about it, and then you can share it. Yes, students, is this a difficult question? Or are you thinking? Are you taking the time to think, or do you feel like this is a difficult question? Okay, Fatima is ready. Yeah, Fatima. My favorite time in the day is morning because I wake up early in the morning Hmm. and I offer prayer and read my Quran lesson and just I feel so fresh. Mm-hmm. You feel fresh? Okay. You feel really good in the morning? Yeah. I love morning. I love morning vibes. There's no disturbance of voices of people or exhaustion and uh, it's just peaceful time. Okay, it's like a very peaceful time for you. And also, yes, I to agree to that. Mornings are very energetic and you wake up fresh and you do all the stuff that you can. Okay. Moving on to yes, anyone else who would like to speak on this topic? Anyone ready to share their routine? Or you can share anything. Uh that why do you like the favorite time of the day? I feel like this can be a tricky question. I feel like it's a complicated for the students. I because not many are participating. So let me change the slide. If you feel like that this is a difficult topic, just say it. Okay, I would like simply change the topic then. Okay, so students, we only got 4 or 5 minutes left. So I have shared the next slide. It's about who was your favorite teacher and why. Any favorite teacher of yours and why did you like them? It could be your school teacher, it could be your university teacher, any teacher that you were inspired of. Miss Okay, Pari, one thank you second. very much for being with us. Beta, that was the demo session for the afternoon students. If you are seriously interested in joining this course, kindly submit your fee. जो students अपनी fee submit करवा चुके हैं already,
उनको बहुत जल्द उनके ऑफिशियल ग्रुप में हम ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।